My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we're doing a CAT 2019 spider chart based caselet. Start करते हैं session. And if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. You can also message me on Telegram at adityakt. So this is the caselet based on a radar graph or spider web chart. And then this is followed by 4 questions. So first of all, pause the video and try to solve it. Then only watch the solution. Okay, let us read the caselet first. 5 vendors are there who are being considered for a service. The evaluation committee evaluated each vendor on 6 aspects: cost, customer service, features, quality, reach, and reliability. And on every aspect, they have been evaluated on a scale of 0 to 100, where 0 is worst and 100 is perfect. The evaluation scores on these aspects are shown in the radar chart. For example, vendor 1 obtains a score of 52 on reliability. So score of vendor 1 on reliability, that is, this is vendor 1 in violet. So that is 52 in reliability. And vendor 2 obtains the score of 45 on features. So 45 on features for vendor 2. And vendor 3 obtains the score of 90 on cost. Okay. So based on this, we have questions. The questions are: first question, on which aspects is the median score of the 5 vendors the least? Second one, a vendor's final score is the average of their scores on all the 6 aspects. Which vendor has the highest final score? And list of all the vendors who are among the top 2 accordingly. And last one, list of all the vendors who are among the top 3 on all 6 aspects. 4 questions are there. ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि सारा का सारा जो डेटा है हमारा उसको हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, सारी वैल्यूज को टेबल फॉर्म में लिखें और फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट कुड बी वन वे. अच्छा, पहले क्वेश्चन के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उतना भी करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड मेथड ये हो सकता है. जो इंटेंट होगा इस पर्टिकुलर केसेट को बनाने के पीछे कि you can observe the values from this radar chart and then answer the questions. तो पहले हम सेकंड मेथड से करेंगे विद ऑब्जर्वेशन और उसके बाद में फिर हम टेबल बना के भी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन विच आस्पेक्ट्स इज द मीडियन स्कोर ऑफ द 5 vendors the least? In every aspect you have to find out the median, and on which aspect the median score is the least. Since 5 vendors are there, तो मीडियन स्कोर क्या होगा? मीडियन स्कोर विल बी थर्ड वेंडर का स्कोर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड वेंडर का स्कोर. And we have to check the median for cost, quality, reliability, and customer service. So cost, quality, reliability, and customer service. ओके, तो थर्ड या तो टॉप से देख लो या फिर बॉटम से देख लो. अब अगर हम टॉप से थर्ड स्कोर देखते हैं, थर्ड स्कोर इन कॉस्ट इज फॉर वेंडर 1 एंड दैट इज अराउंड कि 90 इज हाईएस्ट, देन 80, 70, 60. इन साइड से देखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. तो मिनिमम 10 है सबसे पहला वाला हेक्सागन एंड लास्ट हेक्सागन इज 90. ओके, सो कॉस्ट में मीडियन स्कोर क्या है? दैट इज 90, देन 80, 75. दिस इज 75. इन रिलायबिलिटी मीडियन स्कोर क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो दिस इज 52. ऑन क्वालिटी थर्ड स्कोर इज 90, 80, 70, 60. And last one, in customer service, the third score is, this is 90, 80, 70, 60, 50. So this is exactly 50. So minimum value is for customer service. Answer आ जाएगा अपना, option D is the answer. That customer service के लिए the median score is the least among the given options. Okay, clear? Next question. Question number 2. A vendor's final score is the average of their scores on all 6 aspects. Which vendor has the highest final score? फाइनल स्कोर एवरेज है. अब एवरेज भी उसी का मैक्सिमम होगा जिसके लिए कि टोटल सम मैक्सिमम होगा. तो फॉर विच ऑफ द वेंडर्स द टोटल सम इज मैक्सिमम? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. So one way is to find out all the values. Second method could be comparing the vendors. Vendor 1, vendor 2, vendor 3, vendor 4, इनके बीच में से ही कोई एक हमारा मैक्सिमम है. तो vendor 5 को तो चेक ही नहीं करना है, पहले 1 and 2 को कंपेयर करते हैं. तो vendor 1 is with the violet line and vendor 2 is with the orange line. So compare violet and orange. Okay, so if we compare violet and orange in terms of cost, तो cost में orange is higher by roughly 5 points plus 5, isn't it so? Then violet is higher in reliability, reach में भी violet is higher and by a good margin, and then quality में they are almost equal. In features
violet is slightly lower, slightly on the lower side, and on customer service again, violet is higher. So in most of the aspects, in reliability, violet is higher. In reach, violet is higher by a good margin, and in customer service as well, violet is higher. So in most cases, violet is higher. तो margin ज़्यादा है, तो definitely vendor 1 is greater than vendor 2. Vendor 1 का जो total sum होगा, that should be greater than vendor 2. ओके अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना होता तो फिर हम गैप को विद साइन लिखते और वहां से हमें डिफरेंस भी पता चल जाता है रफली कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉस्ट में क्या आ रहा है, कॉस्ट में ऑरेंज इज +5, ठीक है, और फिर यहाँ पे देख रहे हो गैप कितना आ रहा है, रफली 12 का गैप आ रहा है, तो -12 होगा बिकॉज ऑरेंज इज इनसाइड नाउ। और यहाँ पे गैप कितना है यार, यहाँ पे गैप हमारा आ रहा है रफली 25 का, तो -25 हो जाएगा। एंड देन हियर ऑरेंज इज इनसाइड बाई रफली 5, तो +5 -5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिफरेंस भी देख सकते हैं, हालांकि मैं डिफरेंस नहीं देख रहा, हमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेंडर मैक्सिमम होगा। तो वेंडर 1 एंड 2 के बीच वेंडर 1 इज डेफिनेटली स्कोरिंग टोटल स्कोर इज हायर देन वेंडर 2, दैट इज फर्स्ट थिंग। अब क्योंकि वेंडर 2 इज लेसर देन वेंडर 1, तो क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए तो वेंडर 2 को आगे कंसिडर नहीं करेंगे। अब कंपेयर करते हैं वेंडर 1 एंड वेंडर 3 को। बिटवीन 1 एंड 3 वेंडर 1 इज इन वॉयलेट एंड वेंडर 3 इज इन ब्लैक। ओके, let us compare vendor 1 and vendor 3. So between vendor 1 and vendor 3, in cost, vendor 3 is taking a lead, again taking a lead in reliability. Okay, then in reach the value is lesser, ठीक है, वैल्यू इज लेसर, तो कॉस्ट और रीच में ऑलमोस्ट कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को। कॉस्ट में जितना लीड है उतना ही काइंड ऑफ रीच में लेसर है। देन फोर्थ केस क्वालिटी में अगेन लेसर है। एंड इन फीचर्स बिटवीन 1 and 3 there is lead, clear lead for vendor 3, and last केस में there is a lead for vendor 1. तो vendor 1 and 3 are kind of close, बट जो लीड है जिन जिन केसेस में वहां पे दैट इज मच हायर, isn't it so? तो यहाँ पे लीड कितना आ रहा है, इन दिस केस लीड इज रफली ऑफ 15, हियर द लीड इज ऑफ फ्रॉम 50 to 70 रफली ऑफ 25, हियर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ roughly 20, -20, and then -15, then here again +15, तो कैंसिल आउट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है। और फिर लास्ट में कितना लीड आ रहा है, +5 आ रहा है यहाँ पे। तो नेट में क्या रिजल्ट आ रहा है, एक सेकेंड, जहाँ पे इनसाइड गया है वहाँ -5 होगा, हाँ हाँ -5 है, तो -40 रफली और प्लस में आ रहा है 55, तो डेफिनेटली ब्लैक वन इज वेंडर 3 इज स्कोरिंग हायर देन वेंडर 1, ठीक है। जरा सा भी डाउट हो तो कंपेयर कर लो सारी की सारी वैल्यूज को, अदरवाइज देख के ऑब्जर्व करके कोशिश करना है। तो डेफिनेटली वेंडर 3 इज स्कोरिंग हायर देन वेंडर 1, वेंडर 1 इज स्कोरिंग हायर देन वेंडर 2। अब वेंडर 3 एंड 4 को कंपेयर कर लो, वेंडर 3 एंड 4 में 4 इज येलो, so between yellow and black, so clearly black is leading, vendor 3 is leading than vendor 4 in cost, again leading by a huge margin in reliability, leading by a good margin in reach, leading by a good margin in quality, and in features yellow is leading, vendor 4 is leading, and in customer service also vendor 4 is leading, but in most cases vendor 3 is leading, so clearly vendor 3 should be scoring more than vendor 4, because read only reliability in itself कितना है यहाँ पे, from 25 to 75, 50 का लीड है, लीड here is that of 20, lead here in reach is also that of roughly 20, and even here the lead is almost 20, ठीक है। सो बाकी केसेस में कंपनसेट तो कर नहीं पाएगा, डेफिनेटली वेंडर 3 इज स्कोरिंग मैक्सिमम, तो आंसर विल बी वेंडर 3, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, list of all the vendors who are among the top 2 scorers on the maximum number of aspects is which of the following, तो those vendors who are among the top 2 scorers on the maximum number of aspects, ओके तो यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करना है टॉप 2, तो अगेन ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, टॉप 2 देखना है, तो इन कॉस्ट टॉप 2 क्या है, ब्लैक एंड ऑरेंज, यानी कि वेंडर 3 एंड वेंडर 2, ओके। तो सिंस दीज आर इन टॉप 2, तो इनको टॉप 2 में कंसिडर कर लिया, एक हमने डॉट लगा दिया इनके साथ में, जिसके केस में मैक्सिमम डॉट्स होंगे वो हमारे आंसर होंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी में टॉप 2 है ब्लैक एंड ब्लू, तो अगेन अ डॉट फॉर ब्लैक एंड अ डॉट फॉर ब्लू,
top 2. Top 2 in reach are violet and blue. So first for violet. Then top 2 in quality are violet and orange. Okay. Top 2 in features are yellow and blue. And top 2 in customer service are yellow and violet. So in the end, the maximum in top 2 are for vendor 1 and vendor 5. So the answer for this question will be vendor 1 and vendor 5 option D. ठीक है, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है बात? Now last question, list of all the vendors who are among the top 3 vendors on all 6 aspects. Very important, on all 6 aspects. So those vendors should be in top 3 on all the 6 aspects. Okay. So देखते हैं, for example in cost top 3 are vendor 3, vendor 2 and vendor 1. ठीक है, so top 3 are vendor 1, vendor 2, vendor 3. अब since in all 6 aspects they have to be in top 3, तो 4 and 5 तो eliminate हो गए because they are not in top 3 in cost. Not in top 3 in cost. तो 1, 2, 3 को ही compare करना है आगे. In reliability top 3 are vendor 3, then blue, since blue was already not there in cost, तो उसको ignore मारो. ठीक है, और so black यानी कि vendor 3 and vendor 1. So these two are possible. Vendor 2 भी eliminate हो गया. In reach, in top 3, both are there, vendor 1 as well as 3. In quality, in top 3, again both vendor 1 and 3 are there. In features, in top 3, vendor 1 is not there, so that is also eliminated. Now vendor 3 को check करना है for last case in customer service. In customer service also, vendor 3 is in top 3. So definitely vendor 3 is in top 3 in all 6 aspects. So answer will be vendor 3 option D. अगर नहीं होता तो फिर ऑप्शन ए आंसर रहता है, नॉट द वेंडर्स. क्लियर है? ठीक है, सो दिस वाज हाउ दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन डन इन एग्जामिनेशन कंडीशंस. क्लियर है बात? अब टेबल बना के भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हालांकि टेबल बनाने में टाइम ज्यादा खर्च होगा, तो बट करते हैं, वैसे भी कोशिश करते हैं. ठीक है, तो टेबल में वैल्यूज लिखने की कोशिश करते हैं फॉर ऑल द 6 एस्पेक्ट्स फॉर 5 वेंडर्स. वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3, वेंडर 4, वेंडर 5 ऑन कॉस्ट, रिलायबिलिटी, रीच, क्वालिटी, फीचर्स एंड कस्टमर सर्विस. सो इन कॉस्ट क्या वैल्यूज आ रही हैं फॉर वेंडर 1? सो वेंडर 1 के लिए कॉस्ट में वैल्यू इज 90, रिलायबिलिटी इज 75. सॉरी, दिस इज फॉर वेंडर 3. So for vendor 1, that is violet, value in cost is 75, then 52 in reliability, then 80 and roughly 72 in quality, and then 10, 20, 30, 40, 40 and then 55, 40 and 55. Sum आ जाएगा 127, 207, 279, 319 and 374, roughly 374. Okay, थोड़ा सा 2-4 का डिफरेंस हो सकता है, बट अदरवाइज रफली इट इज 274, 374. Clear? Next, for vendor 2, which is in orange, so in cost that is 80, then 40, 80, 40, then 58, 70, and this value here 10, 20, 30, 40, 70, 45 and roughly 40, 45, roughly 42 मान लेते हैं उसको. ठीक है, roughly because 40 से slightly higher है. So 80 plus 40, 120, 178, 248, 293, 295 and 40, so 335. For vendor 3, which is in black, so 90, 75 and then 90, 80, 70, 65. So 90, 75, 65, 60, 55 and 50. So total is 165, 230, 290 and 105. So 3 are 290 and 105, 395. For vendor 4, which is in yellow,
So 70, 25, 45, then 40, 90, 70. So 70, 95, 140, 180, 270, 340. And for last vendor 5, which is in blue, so this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 and 60, and then 70, 60, 60, 70. Then after 70, this is roughly 50, 48 मान लेते हैं, 48, 74. तो जहाँ पे वैल्यूज बहुत क्लोज आ रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है, क्योंकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमसे एग्जैक्टली वैल्यूज पूछ रहा हो कि सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, तो वहाँ पे 2-4 का डिफरेंस रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लास्ट वैल्यू फॉर ब्लू, तो दैट इज 10, 20, 28. ओके. So 60, 60, 120, then 190, 238, 242, 312, and 340. So vendor 4 and 5 are coming very close. इनका स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है. क्वेश्चंस कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था मीडियन स्कोर, वो तो ऑलरेडी हमने कर लिया, वैसे ही करेंगे जैसे पहले हमने किया है. मीडियन स्कोर के लिए इन सारी की सारी वैल्यूज को देखने का कोई सेंस नहीं बनता. दैट विल ओनली बी बेसिस ऑफ टाइम. मीडियन के लिए वैसे ही मेथड हमारा अप्लाई करेंगे. डायरेक्टली हम थर्ड वैल्यू देखेंगे फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम इन एवरी सेक्शन, इन एवरी जो हमारा क्या है मेट्रिक. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, वेंडर्स द फाइनल स्कोर इज द एवरेज ऑफ देयर स्कोर्स ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट्स. तो हाई स्कोर किसका है? हाई स्कोर आया है क्लियरली फॉर वेंडर 3. दैट विल बी द आंसर. Next question. List of all the vendors who are among the top 2 scorers on the maximum number of aspects. तो top 2 in maximum number of aspects. Again same काम करेंगे but table से करेंगे इस बार. तो top 2 in cost are 90 and 80. So vendor 2 and vendor 3. Top 2 in reliability, that is for 75 and 60. So vendor 3 and vendor 5. Top 2 in reach is for 80 and 70. So first and last. Top 2 in quality is for 72 and 70. So vendor 1 and vendor 2. Top 2 in F क्या था आपका features, so that is for 90 and 74. So vendor 4 and vendor 5. And top 2 in customer service is for 55 and 70, which is V1 and V4. So clearly V1 and V5 are getting in top 2 in 3 aspects. So that is why they should be the answer, option D. And last one, list of all the vendors who are among the top 3 scorers on all 6 aspects. Again टेबल से करेंगे बट लॉजिक वही रहेगा कि टॉप 3 देख लेंगे इन एनी क्राइटेरिया, और फिर उसके बाद में बाकी सब में देखेंगे कि वो कौन कौन से वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है. तो कॉस्ट में टॉप 3 क्या आ रहा है अपना? कॉस्ट में टॉप 3 आ रहा है V1, V2 एंड V3. ओके. V1, V2, V3. नाउ रिलायबिलिटी पे देखते हैं ओनली फॉर V1, V2, V3, बाकी सबको चेक नहीं करना. तो V1, V2, V3 हमारा रिलायबिलिटी पे क्या रहेगा, क्या टॉप 3 में है? ठीक है. तो टॉप 3 हमारे रिलायबिलिटी में कौन कौन से हैं? V3, देन V5 एंड V1. तो यस V1 एंड V3 आर देयर, तो V2 एलिमिनेट हो गया. ठीक है. V1 एंड V3. नाउ फॉर रीच, टॉप 3 आर V1, V5 एंड V3. तो V1 V3 आर ऑलरेडी देयर. इन क्वालिटी V1, V2 एंड V3. तो V1 V3 आर स्टिल देयर. इन फीचर्स टॉप 3 आर V4, V5 एंड V3. तो V1 भी एलिमिनेट हो गया. नाउ इन कस्टमर सर्विस टॉप 3 आर V4, V1 and V3. So V3 is still there. So that must be the answer. V3 is the answer. That in all 6 aspects, V3 is vendor 3 is in the top 3. So this is how the question should have been done. ठीक है. बेटर अप्रोच क्या होगा कि हम ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें फॉर एनी सच क्वेश्चन, अनलेस कि हमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए हों जहाँ पे कि हमें सारी की सारी वैल्यूज का जो एनालिसिस है वो प्रॉपर्ली करना पड़े, एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत पड़े. डिपेंड करता है कि डेटा क्वेश्चन में कैसा दिया है और उस क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे पूछे. तो अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे हमें टेबल बनाना ही पड़ेगा. बट अदरवाइज बिना टेबल बनाए अगर काम चल जाता है तो फिर वैसे ही करने की कोशिश करेंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 4 और 5 क्वेश्चन, मान लो 5 में से ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ पे कि तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत पड़े. तो टाइम कम बचाए, टेबल बनाने के बजाय हम ऑब्जर्वेशन से करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन अपने बनना है, और बाकी सेट्स पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे. तो दिस इज हाउ दिस
पर्टिकुलर सेट्स शुड हैव बीन डन। इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव कि सारी बातें समझ नहीं होंगी, और फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।